कहानी का शीर्षक दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे से टकराई। रिया एक स्वतंत्र ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपने काम में बहुत गंभीर रहती थी। उसकी हर बात में एक खास अंदाज था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन एक मुकत विचार वाला फोटोग्राफर था जो जिंदगी को एक अलग नजरिए से जीता था। उसकी मस्तमौला प्रवृत्ति अक्सर रिया के संगठित जीवन से टकराती थी। उनकी पहली मुलाकात एक आर्ट प्रदर्शनी में हुई जहां रिया अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। अर्जुन ने उसकी आकर्षक डिजाइनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कला बेहद अद्भुत है। क्या मैं आपकी नजरिए को कैद कर सकता हूँ? रिया ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, मेरी कला खुद बोलती है, मुझे कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कला और फोटोग्राफी में अंतर है। आपकी कला में जीवन की कमी है। क्या आपको थोड़ी मस्ती नहीं चाहिए? मस्ती? क्या तुम जिम्मेदारी को मस्ती कहते हो? उसने तीखे स्वर में जवाब दिया। उनकी बहसें लगातार चलती रहीं, लेकिन हर बार उनके बीच एक अद्भुत आकर्षण बढ़ता गया। अर्जुन ने रिया की मजबूत व्यक्तित्व को देखा और वह उसे भाता गया। वहीं रिया ने भी अर्जुन की चंचलता में एक खास बात पाई। कुछ समय बाद दोनों एक शाम समुद्र के किनारे मिले। अर्जुन ने रिया को अपने साथ बुलाया। सूर्यास्त की सुंदरता ने रिया के दिल को छू लिया। क्या तुम हमेशा इतनी गंभीर रहोगी? अर्जुन ने मजाक में पूछा। शायद ये मुझे संतुलित रखता है, रिया ने हल्के से कहा। या शायद ये तुम्हें उड़ने से रोकता है, उसने चुनौती दी। रिया ने उसकी बातों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि वह सही है। जिंदगी में थोड़ा मजा होना जरूरी था। उन्होंने हाथ पकड़कर रेत पर नाचना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीते, उनके रिश्ते में गहराई आई। रिया ने अर्जुन के साथ मजा लेना शुरू किया और अर्जुन ने रिया से जिम्मेदारी का मतलब सीखा। वे एक दूसरे को प्रेरित करते रहे और उनका प्यार एक अद्भुत संतुलन बन गया। लेकिन फिर एक दिन रिया को एक बड़े शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अर्जुन को छोड़ना पड़ेगा। जब उसने अर्जुन को बताया तो उसकी आंखों में चिंता का भाव आ गया। क्या तुम सब कुछ छोड़कर जा रही हो? उसने पूछा, दुखी होकर। यह मेरा सपना है अर्जुन, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, रिया ने कहा। फिर इसका पीछा करो, उसने सहजता से कहा। लेकिन इसे यहाँ जो तुमने बनाया है उसे मत भूलो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊं, रिया ने कहा। आंसू उसकी आंखों में थे। तुम नहीं जाओगी, उसने भरोसा दिलाते हुए कहा। हम इसे समझ लेंगे। एक रात वे रिया के घर की छत पर बैठे, तारों की चमक में। मुझे एक वादा करो, रिया ने कहा। किस बात का? अर्जुन ने पूछा। कि तुम हमेशा अपने सपनों का पीछा करोगे। हमेशा, उसने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह गई और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे दूर रहकर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। महीनों बाद रिया ने नई नौकरी में तरक्की की, जबकि अर्जुन ने अपनी फोटोग्राफी में सफलता पाई। वे एक दूसरे से जुड़े रहे और दूरी ने उनके प्यार को कमजोर नहीं किया। अंत में रिया वापस दिल्ली आई। स्टेशन पर अर्जुन फूलों के गुलदस्ते के साथ उसका इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, उसने कहा। मुझे भी, रिया ने कहा। उसकी आंखों में भावनाएं छलक रही थीं। मैंने कुछ सीखा है। Welcome back. Now in this video, we are going to start by creating a product inside of Rocketer. So to do that, we're going to go to the products link, and then we're going to click add a product. Now once we come to the add a product screen, we can add a product in several different ways. We can do a file download, we can add a serial or a code, or we can add in a service where we will have to deliver an email for the customer to actually get what it is that we have. Now, if you want to deliver people to a page where they're going to actually get everything that you have to offer them, you're going to actually deliver them using the email. You can actually do that easily through the service button. But if you want to give them a download also, as well as a URL, you are going to be able to give them the download in the actual purchase process and then send them an email subsequently with their download link. So let's start by clicking the file download button. And what we're going to do now is we're going to give our product a title, and we're going to give it a description, and then we're going to give our product an image by uploading it using the choose file button. So once you have your product image in place, you can then click next.
Now the next tab that Rocketer is going to bring you to is going to be the Settings tab. And we are delivering a file, so what we're going to do is we're going to click Choose File, and we can actually upload any kind of document type. Typically, we're talking about a PDF or a zip file. So let's go ahead and upload a PDF. We can actually limit the number of times that this product can be purchased, or we can actually let it be sold an unlimited number of times. We can limit downloads to a particular purchaser's IP. We can also watermark the PDF with the purchaser's IP and email address. That is one of the advantages of using the PDF with the system. Now, once again, if you have to use and deliver a URL, we're going to be able to do that in section 4. What we're going to do now is we're then going to click Next. We are now going to set our price. We can use a fixed price, or we can decide to allow our buyers to pay what they want to pay. But if we want to be more traditional, we can use the pricing alternative. And so what we're going to do is we're going to write in our price. We're going to accept Bitcoin. And then we can actually use a couple of features here, and Rocketer will allow us to have everyone to be able to purchase, with the exception of certain limitations. So we can limit people by our global blacklist, and anyone buying from a proxy, which typically indicates some kind of lack of trust, or we can allow all buyers to purchase. The most conservative way to allow people to purchase would be to not accept purchases from people on a global blacklist and proxies. So in this particular case, we're going to use the most conservative method, and then we're going to click Next. Now you're going to notice that your buyer is going to have an email sent to them by Rocketer. So if you want to have your buyer sent to a certain URL, you are going to write that URL inside of this email. So for example, you'll notice that they're going to get a link to their file URL. They're going to get a link to the product title. We can actually put in a URL to this email. Now, one thing that we can determine at this point is whether or not we're going to have affiliates to be allowed to promote our product. And what we're going to do is we're going to click this box to say yes. We're going to give our affiliates a percentage. And once we've done that, we can then click Add Product. And once we've done that, our product is ready to go to the next step for placing onto our website. Okay, so with that, thanks, and I will see you in another video.